Honestly, it's not easy to control my sentiments and my love for you all. Alhamdulillah. मुझे लगता है जब प्यार से लोग जो कहते हैं ना कि मैडम आपके पास कुछ एनर्जी कहाँ से क्या तो it's always been the love that you people have radiated that had made me what I am. So all my students, all my colleagues, you've all played such a beautiful role in my life, and I think I would never have been Dr. Bushra Lally or Dr. Bushra Mother had it not been for the love that you all gave it to me. I had my ups and downs here, and I think in every aspect I learned so much from all of you. It helped me in my growth, it helped me in what I have become today. And it's not really easy for me to say thank you to all of you, and I don't want to miss out on anything, starting from my students right from 1998 when I joined the university and you were all little students, and the way you had all come to me and the way you had all shared things with me. जैसे फाहद को मुझे कहता है कि मैं नानी डॉक्टर साहब और आके मुझे परमिशन भी कंफर्म भी कर दिया सो आई डोंट नो व्हाट टू से इन द सेंस कि मौलाना रूमी की बात हुई थी तो वो कुछ ऐसा था कि जब मैंने मसनवी पढ़ी तो उसमें ये था कि उसके बाद जो मुझे ऐसे समझ में आया वो ये था कि अल्लाह की कुर्बत जो है वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत के बगैर हासिल हो नहीं सकती तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जिस शख्स को अल्लाह की मखलूक थोड़ा सा मैं अल्लाह ताला तौफीक दे के करा वो मोहब्बत हमें मुझे मिली भी और फिर मैंने कोशिश भी की इसको देखने की करने की और मोहब्बत को समझने की भी कोशिश की और महसूस करने की भी कोशिश की और मेरी क्लास में भी मैं अक्सर आई यूज्ड टू पुट दिस वर्ड लव एंड आई यूज्ड टू आस्क माय स्टूडेंट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लव and then it was always about caring, giving respect to the other, and there were so many meanings that the students have taught me and I have felt it. So there are few things that you learn from your words and there are few things that you learn from your actions. So you have all been a source of so much of love for me and it's not easy for me. About 2-3 weeks back, so I had my जो भी मेरा रोना था. And it was not easy, but now I've become much stronger. Though breaking points do keep on coming. Well, I would like to just say that Department of Journalism Studies in the last few years has been something that I've really dreamt of. And if you look into the objectives of the Department of Journalism Studies, where I had tried to put the spirit with which the department was, with the spirit with which we started this department. It was about, it said that it is about journalism with care. And what I've tried to do and what I've learned from all of you is this, that it's about caring. It's not about trying to prove things. And what good is that scholarship, what good is that education that alienates us, जो हम सबको तफरीक में ले आए, हमें अलग कर दे, तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी डिग्रीज़ के लिए नहीं आते, बड़े बड़े नामों के लिए नहीं आते, सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं आते, अपनी प्रमोशंस के लिए नहीं आते, शोहरत के लिए नहीं आते. लेकिन अगर हमारी तालीम दिलों को जोड़ने वाली नहीं बन रही है तो देयर इज समथिंग मिसिंग. और वो जो दिलों को जोड़ना है उसमें हैव दिस रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द अदर्स. So no matter from which background you come, we all have our humble beginnings and we've all kind of success stories in our own way. तो उसके अंदर the most important thing is कि जब आप अपनी इज्जत करते हैं, अपने अंदर ये एहसास रखते हैं कि yes I am, and at the same time the other is also someone. तो जहाँ पे आप अपनी इज्जत करते हैं, जैसे मोमिन की निशानी यही है कि दूसरे के लिए भी वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है. तो आप दूसरों की भी वही इज्जत करें, वही मोहब्बत दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं. So this is just a little thing that I wanted to say. और मैं हमेशा मेरे सारे कोलीग्स को तो बात ये जुड़ी हुई है, सुन के शायद बोल रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ और ये मुझे डॉक्टर शफीक ने सिखाया, none of us are better than all of us. अल्लाह ताला डॉक्टर शफीक को भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे. मेरे अपने उस्ताद सब ने मुझे सिखाया, डॉक्टर मुबीश ने सिखाया कि if you cannot solve a problem, you are part of a problem. And from every teacher I have learned, and all my students have been my teachers.
आप लोग मुझे मेंटोर कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप मेरे मेंटोर रहे हैं थ्रू आउट माई more than 26 years of teaching here. From each one of you, I have learned, even in my lows, even in my negativity, जो भी language जो भी थी, I have learned from all of you. So I'm thankful to all of you for helping me like that. एक आखिरी में बस मैं ये बात करना चाह रही हूँ जो कि सोनिया pointed out very well. End of the day, it's very important that we respect our identity, not just as individuals, but also as a community. Or this is a thing that my family and the first level of love is when you love your family, your immediate family, and then the second level is when you love your community, and the third level is when you love the humanity, and the fourth one is when you love everyone, challenge for it, and the fifth level is when you're loving your whole universe and you feel the pain. So let's become those individuals who are just not thinking about your own self, you're thinking about the entire makhluk around you and be a source of integration. क्योंकि तौहीद मतलब ही जुड़ने का है और तौहीद का उलट है शिर्क और शिर्क है डिसइंटीग्रेशन. तो हम सब माफ़ करने वाले बने, हम सब मिल के काम करने वाले बने और ये सारा जो हमारे मेरा जो सफ़र इतना स्कूल में रहा, फिर एम की बात हुई और अब आगे जाके जो भी मैं अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, मैं हम्बल वेरी हम्बल वे टू बी अ होल आइडिया इज़ टू बी कनेक्टेड विद द अदर. और आखिर में ये बात कहना मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान दो वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, लेकिन इसमें हमने उम्मीद व यकीन नहीं छोड़ना एंड बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ ऑल दोज डिस्कोर्सेस विच आर ऑफ डिस्पेयर, डिविजन, हेट्रेड एंड फियर. ना खौफ में रहना है, ना उम्मीदी में रहना है, ना तकसीम में रहना है, ना नफरत में रहना है. आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी नीड जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है ना उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए. और डोंट क्राई लाइक दैट बिकॉज यू गोइंग टू मेक मी क्राई. एंड ऑल ऑफ माय यंग स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली दिस इज such an honor and a treat for me to be your teacher in my own humble way, and I'm so happy again that I have had that opportunity to be with all of my colleagues and my students. And thank you, Abu, for being with me. My father. जिसमें मैंने अपनी का जिक्र ना किया और अभी हमेशा बहुत सी बातें उनकी मैं कहती थी कि हर एक को उसकी बैकग्राउंड का मालूम, जो बात कह रहा है उसकी बात अच्छी है तो उसको पकड़ो, और कभी किसी टेक लाइफ एज इट कम्स, कभी किसी को हवाली बनाना. माय फादर टॉट मी डिग्निटी ऑफ लेबर. समटाइम्स पीपल वर सरप्राइज कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. थैंक यू अबू जानी. एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय दैट माय फादर एंड माय मदर एंड विद मी वाज दैट हलाल की रोजी अबू जानी आपने हमें खिलाई एंड ऑलवेज मेड श्योर that the black and whites are there for us, and if I did not compromise on certain value system, thanks to my parents, my father, my mother, they were so courageous. They never ever compromised on so many things. So we were quietly absorbing things. My mother has always been very affectionate towards all her relatives, even though who were not that privileged. So she would go out of her way to take care of them. And I think in a very subtle way, she gave us that value system. And my father, who would always be with everyone, irrespective of their backgrounds or their economic backgrounds or social backgrounds, he would always be sitting with them, chatting with them, talking and joking with them. Thank you, Abu Jani, for bringing that value in us. My father, mashallah, is 90 years old and he always keeps does this joke कि जब तुम मेरी उम्र की पहुंचोगी तो मैं तुमसे उस पर पूछूंगा. So thank you, Abu Jani, thank you, Zahir, thank you, Faiza, thank you everyone for being with me.